Good morning. As you know, I am Dr. Jaydev Sahu and this is my second class with you, which is live on YouTube. Before going to start the class today, let me give you some information which will be vital for you. First one is, we are having one Kaun Banega Topper contest. There what we have to do, all these students can take the help of this and they can have this OPSC, PGT, SSB TGT, LTR, OSSC, CGL, RI, AMIN, AMIN, then ARI, SFS, staff selection, etc., ICDS. So, all these things, those who are aspirants, they can always take the help of these quiz tests, Kaun Banega Topper contest, and it will be very profitable for you also. And next time you come for this, you will be getting benefited. As you know, for this course, that is PGT course, for which the advertisement has already been made by OPSC, you have got part A, which is compulsory, that is general knowledge and general English. Both are 50% marks each, that is 100 marks. Then these are the numbers in which you can contact our organizers. The organizers will give you more data regarding all these things. Coming to the PGT in commerce, we are the two teachers who will be teaching you. All the theoretical portions will be taught by Smita ma'am and all the problem portions will be taken care of by me. I am Dr. Jaydev Sahu, this one. Okay, and this is the timetable from Monday to Saturday. Who will take which class at what time? Everything is given. So, Smita ma'am will take at 12 o'clock on Monday, Wednesday and Friday, and I will be taking on Tuesday, Thursday and Saturday, and her timing will be 12 o'clock always and my timing will be 11 o'clock. This is all regarding this information which I wanted to give you. Now we will come to the topics which we will cover today. Before going to the accounting proper classes, you must be well versed with these terms which will very often come before you. First of all, transaction. What is a transaction? Transaction means exchange of money or money's worth by one party to another. This is called transaction. Dita party thibe, exchange of money and money's worth haba, gote party money daba, gote party money ro worth ta daba. Then only it will become a transaction. So, exchange of money or money's worth by one party to another is called transaction. Then we will come to event. Transaction and events are so to say same, but transactions have financial transactions having financial considerations will be called transactions, and those are not having financial implications. Later on, of course, indirectly it has, but it will be called event. An event is the end result
End result of any transaction. That means I will give you some example for that. Suppose resignation by a director or retirement of managing director, like this. These are all events. Converting raw material into finished product, that is called manufacturing. So these are events, not transactions. But when we call that an amount of rupees 5,000 has been given to the managing director for his conveyance, this becomes a transaction. Okay, because the transaction has to have two parties, and one party will have to give money, another party will have to give the benefit of that or worth of that. So that is called transaction, and this is event. Now coming to debtor. Who is a debtor? A debtor is a person or institution or company, whatever it may be, who takes goods from us on credit, who purchases goods from us or services from us on credit. He is a debtor, and debtor is an asset. Similarly, creditor is a liability. Creditor means those persons and firms from which we are purchasing goods on credit. आमे जहाँ ठारू क्रेडिट रे किनुचे सी आमर क्रेडिटर हे गला. क्रेडिटर हला माने आमर लायबिलिटी हे गला. आमे आसीबा नेक्स्ट टाकू कैपिटल. व्हाट इज कैपिटल? Amount owing to the proprietor is called capital. Any amount owing to the proprietor is called capital. When the proprietor starts the business, he brings some money or some other assets. So we owe these things to him or not. So that is called capital. Then goods or stock. Goods refers to only those goods in which the firm deals with. For example, a furniture dealer, for him a chair or a table or a cot, whatever it may be, that is goods for him. But if he will suppose purchase a watch, that will not be furniture, that will not be called his goods. So that is the difference between the two. Similarly, for me, if I purchase a book, if I am a bookseller, if I purchase so many books, then it becomes goods. But for any person who does not deal with books, but purchases for some reason some books, then that book, suppose one income tax book he will purchase for filing his income tax return, that will not be called his goods. It will be called what? It will be his asset. Like this it will be there. Then we will come to, we have discussed all these things, debtor, creditor, capital, goods or stock, then assets. In the last class I have given you the examples of assets. Assets have been divided into 4-5 categories. I have already discussed. So assets means by using which we can benefit in the latter days. पछरे आमको से पैसा मिली जीवो ताको इन्वेस्ट करके आमे जेमती फर्नीचर फिक्चर्स हैला, प्लांट एंड मशीनरी हैला, ताको आमे कोन करबा सेटा को यूटिलाइज करके आमे सेथरो कॉस्ट आमे प्रोडक्शन करबा एवं से प्रोडक्शन को सेल करबा, सेल कले आमे बेनिफिट पाइबा. So any benefit which is occurring in the future years due to something, that is called asset. Then मु तुमको कहितली current asset, fixed asset, intangible assets, then vesting assets, fictitious assets, all these things we have discussed in the first class. Then we will come to loss, expense and expenditure. This is very important. Comparatively, loss means you are spending for no benefit, that is a loss. Suppose take the case of an accident. In an accident, a car worth rupees 10 lakh is wasted, suppose. If the insurance is not there, of course, then it is completely wasted. That means you are not getting the benefit, but you have spent money 10 lakh rupees on this.
So that is a loss. Similarly, loss by theft, that is also a loss, because we have kept some money, kept some money or gold or some ornaments, etc. A thief has taken it away. That means we have paid for that, but the thief is taking it away. That's why it is called loss. Then expenses, spending money for getting a benefit of short lasting nature. अल्प समय पे हमको जोटा यूटिलिटी दबा बेनिफिट दबा केमती एग्जांपल सपोज वी आर टेकिंग एन आइसक्रीम आमे 10 टंका देले गोटे आइसक्रीम खाइले बा 15 टंका देले कटक रु भुवनेश्वर बस रे गले दैट बस फेयर सो दीज आर ऑल कॉल्ड एक्सपेंसेस देन व्हाट इज एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग मनी फॉर गेटिंग ए बेनिफिट ऑफ कंपैरेटिवली मोर लास्टिंग नेचर इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर सो किसी यूटिलिटी मिलबनी सेटा लॉस अल्प समय पे किसी यूटिलिटी मिलिबो एक्सपेंस बेसी समय पे हमें जोटा यूटिलिटी पे हमें करूचे सेटा ला एक्सपेंडिचर देन विल कम टू लायबिलिटी जेमते अमाउंट ओइंग टू ओनर और प्रोप्राइटर इज कॉल्ड कैपिटल अमाउंट ओइंग टू एन आउटसाइडर इज कॉल्ड लायबिलिटी दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी तमाने आमे जहा ठारू टंका आनिचे बा किसी धन आनीचे बा किसी आसेट किणीचे किसी कौन करें क्रेडिट रे सेटा हो सी आमर क्रेडिटर हो बट यूजुअली क्रेडिटर रेफर्स टू टेक्निकली क्रेडिटर रेफर्स टू द पर्सन्स और फार्म्स फ्रॉम व्हिच वी परचेज गुड्स यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड्स सो व्हेन वी परचेज गुड्स फ्रॉम समबडी और सम पर्सन और सम इंस्टीट्यूशन और सम फार्म्स on credit then he becomes our creditor it is again a liability. Then equity. What is equity? Equity technically means total of the assets. Now that equity or the total of the assets must have been contributed by some person, either by the proprietor or by the creditors. So the first one is called owner's equity. Capital is called owner's equity, and loan etc. which we have taken from other institutions etc. that will be called outsider's equity. So we can say that owner's equity plus outsider's equity is equal to total assets or equity. So equity means total assets. Total assets means owner's equity plus outsider's equity. Like this we conclude these 10 terms. There are some other terms also, let us discuss. Net worth. What is net worth? Net worth means total of the assets minus liability to outsiders. Suppose we have got 1 lakh rupees worth of assets, but 60,000 rupees we have taken a loan in order to purchase these assets. We have taken 60,000 rupees as a loan. So that 1 lakh rupees total assets minus outsiders equity, that is 60,000, is equal to 40,000, which we are calling capital, and that is also net worth. Net worth is nothing but the capital. Then drawings. When a person or a proprietor withdraws some money or goods from the farm for his personal use, not for the business use, but for the personal use. Suppose his son will take some 100 rupees, that will be called drawings. He gives on his life insurance some premium, that is drawings. He gives income tax, that is income tax of the proprietor himself, not income tax of the organization of the business. So that is also called drawings. Then bad debts. What is bad debt? When we are selling goods or services on credit, it is not sure that all the money can be received or all the money can be collected. Suppose from our experience we know that if the total turnover is 1 lakh rupees, out of which suppose only 10,000 rupees is cash and 90,000 rupees is on credit.
Out of that 90,000, maybe 5% or 10% people may not give us that amount. So that becomes a bad debt. When it is sure that the person who have taken goods on credit from us is going to be insolvent, or he has died and nobody is there to give us the amount, that becomes a bad debt, and bad debt is a loss. Bad debt is a loss. Then sales. Sale of goods only, not the sale of furniture or sale of ornaments, etc. Sale of goods in which we are dealing. Okay, for a furniture seller, furniture sold means it will be also sales. Sales and turnover, these are same thing. Then coming to purchases. Purchases means purchase of goods only. If I am purchasing a watch for 500 rupees, that is not purchases. But if I purchase books, being a bookseller, suppose I purchase books or sell books, that will be purchases or sales. Anything other than that goods, if we are purchasing or selling, that is not purchase or sale. That is purchase of asset, purchase of or payment of a liability, like this. That will not be distributed, that will not be disturbing us. So purchases you have known. What is receivables? Any amount which is to be received at a later date from others, from outsiders, is called receivables. So bills receivable is a receivable. Similarly, debtors are receivables because they will have to give us money at a later date. So these are called receivables. Similarly, payables. Payables means bills payable. If you have promised to pay a certain person or a firm some amount at a later date because you have taken the goods now, that is on credit, we have purchased. So that becomes, that person becomes our creditor. Or if we have written something in writing, we are giving to him, that is called bills payable. So all these things, bills payable, notes payable, etc., all these are liabilities, and that is called payables. Then discounts. Discount is of two types. One is cash discount, another is trade discount. When we want to give some discount in order to increase the volume of sales, बहुत गुड़े केमती बिक्री हो जाऊ बोली आम चाहिए, तेज कौन करिया, मनकर गोटे पेन दुकानी सी कौन करुच्ची, सी कहूँ 12टा को तुमको 100 टकर मिल, कि गोटे गोटे तुम नब तेज गोटाकर 10 टका पड़ो, ताल कौन हो 10 into 12 120 हवा कथा, किंतु सी दौर के 100 रुपीज. दैट 20 रुपीज इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट. You have understood what is trade discount. Then what is cash discount? Cash discount is given in order to encourage prompt payment. जल्दी हमको कैश से दे दिंतु, एथि आम कौन कहे कहते तुम 7 दिन भितर दब तुम 5% डिस्काउंट पाइब. दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट. ओके, सपोज तार 100 रुपीज अच्छी, आम कहवा इफ यू गिव इट इन ए वीक देन यू विल बी गेटिंग 5% डिस्काउंट. दैट मीन्स यू विल हैव टू गिव only 95 rupees. So that is called your cash discount. Here you have to remember one thing, being a student of accountancy, what you should know is cash discount have got effect, we will write it, but trade discount will not be recorded anywhere. It has got no place in accountancy. But then why trade discount we are reading and how we will treat it? Trade discount, suppose 100 rupees ऊपर ट्रेड डिस्काउंट अच्छी 10%, कैश डिस्काउंट अच्छी 5%. तेबे कौन हम ना आउट ऑफ 100 रुपीज फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिडक्ट ट्रेड डिस्काउंट से 10%, दैट इज इक्वल टू 10 रुपीज. मु कहूँ यार अकाउंटिंग इफेक्ट नहीं, बाकी रहा 90 रु माइनस cash discount, suppose 5%. 5% of 90 rupees is equal to 4 rupees 50 paisa. So yes, is 85 rupees 50 paisa. So actually the marked price of a particular goods is 100 rupees, but we offer 10% trade discount and 5% cash discount. So first of all trade discount will be calculated. When we calculate 10% of 100 rupees, that is 10 rupees. So this amount is the trade discount which you will not record in the account. So how we will write? We will write
sales account credited 90 rupees. By deducting this trade discount. Trade discount is never taken into account in accountancy. So, the net figure will be this 90 rupees. For that the entry will be passed. Okay. Now, from that again, if there is discount, cash discount of 5% for prompt payment and he avails it, then it will be 4 rupees 50 paisa, that is 5% of 90 rupees. In this way, what we will get is 85 rupees 50 paisa. We are satisfied with 85 rupees 50 paisa. So, it has got accounting effect. Discount, especially cash discount, is a loss. Trade discount is also a loss, but cash discount is a loss. So, it will be debited. In our books of accounts, it will be debited because debit losses and expenses. I shall come to that later on. Okay. Then we will come to debit and credit. Debit and credit, if I shall go on telling about debit and credit, it will take hours. So, let me tell you in short what is debit and what is credit. In accountancy, we mean the left hand side of an account is called debit and the right hand side of an account is called credit, but not of a statement like balance sheet. In balance sheet, it is opposite. In balance sheet, the debit side appears in the right hand side and in the left hand side the liabilities, which are credit balances. So, never confuse that. Only in accounts, left side is debit and in account right side is credit. Alright, बाम पटे लिखिबा हम अकाउंट्स रो डेबिट, डाहाण पटे लिखिबा क्रेडिट. ए सब काहे के हम पढुचे, ए सब एथि में पढुचे जे फर्दर जते बेला हम एडवांस पढिबा अकाउंटेंट्स रो अलगा पोर्शन गुडा सेतिरे सब बेले एथरु किछि ना किछि सब पेज रे आसीबो. So, you must understand the meaning of this. Okay. Next we will go to accounting cycle. What is accounting cycle? गोटे साइकिल रे कौन होची, गोटे चक अछि त माने एमती थरे बुलिले से किछि बाटा पळेला पुणी आउ थरे बुलला. ए जो साइकिलटा होची अकाउंट्स रे भी गोटे साइकिल अछि. कौन साइकिल ना आगे कौन हबो, तापरे कौन हबो, तापरे कौन हबो, तापरे कौन हबो, एमती लास्ट रे तापरे जाई कि पुणी लास्ट रे एठी पहुंचिया पुणी आउ थरे सेटा करिवा. एटा केमती होची देखो. This is the cycle. First of all, opening balance sheet. गला वर्ष जोटा क्लोजिंग balance sheet थिला, ए वर्ष सेटा हला opening balance sheet. ए वर्ष रो opening balance sheet रे asset सबुडा debit balance देखेबो, credit balance सबु liability उडा देखेबो. ठीक अछि. हमें आगे ताऊ करबा, ताको नेकी जिबा. To start with, suppose cash is an asset. हमें कोन करबा, cash account debit balance suppose 5000 rupees एमती रखिबा. तापर जो कैश आसो पुणी कैश अकाउंट डेबिट हम तार मिसई दवा. एमती जो पेमेंट हम कैश कमी जीवो ताको कमे दवा. एमती कमे मिसेबा कमेबा मिसेबा कमेबा करके लास्ट रे केते अछि क्लोजिंग बैलेंस शीट रे सेटा मेसेज जीवो. सेठी आसीबो हमर कोन साइकिल ओवर हे जीवो. मु आसीबी सेठी. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग बैलेंस हला. तापर ट्रांजैक्शन कोन होउची. सपोज वी परचेज गुड्स, सम कैश विल बी गिवन, सो कैश इज रिड्यूस्ड. Similarly, when cash is that is transaction. So, whenever a transaction takes place, if it is a sale transaction, cash will increase. If it is a purchase transaction, cash will decrease. So, the cycle is going on. Then after the transactions, we have to go for journal. So, what is journal? Journal is a systematic record of transactions. So, these transactions when are taking place will be passing the journal entry. So, that is called journal. Then from the journal, there are so many journals. So, from these journals we will have to classify them, and that classification is through ledger. What is a ledger? A ledger takes care of all the transactions regarding a particular person or
थिंग और अदरवाइज हमर तीन प्रकार अकाउंट अछि ना पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट तो से पर्सनल अकाउंट बा रियल अकाउंट बा नॉमिनल अकाउंट विषय जहाँ हेतिबो घटिथिबो जेते ट्रांजैक्शन हेतिबो वर्ष सारा सब गोटे लेजर अकाउंट रे रहिबो सिमिलरली आ गोटे लेजर अकाउंट हमर कैश पे गोटे हला बिल्डिंग पे गोटे हला लैंड पे गोटे हला प्लांट एंड मशीनरी पे गोटे हला ए समस्त पे लेजर गोटे गोटे हबो से गुडा प्रकृति लेजर अकाउंट्स तापर हम आसीबा सेटा करिवार कारण कोन सेटा करिवार कारण होची हमें जानि पारियो व्हाट इज द लास्ट डेज बैलेंस इधर केते टका बैलेंस अछि ओके देन विल कम टू ट्रायल बैलेंस मुझे कहली लेजर मन करो 60टा लेजर बाहरला लेजर अकाउंट्स केते गुडे अकाउंट अछि डेबिट बैलेंस देखेबो केते गुडे अकाउंट अछि क्रेडिट बैलेंस देखेबो तो जेते डेबिट बैलेंस देखौछि ताको गोटे पट रखि देबा गोटे स्टेटमेंट तैयार करिया जार ना होछि ट्रायल बैलेंस आउ जेते क्रेडिट बैलेंस देखौछि ताको गोटे पट रखि दो ऑल द अकाउंट्स हैविंग क्रेडिट बैलेंस विल बी केप्ट in one side all the balance I mean all the ledger accounts which are showing debit balance that will be kept in another side यार total आउ यार total debit र total आउ credit र total हमें देखिबा केते होची जदि समान हेई गला ताले आपाततः किछि एरर नाही चिल्ड्रन एरर थाई पारे हमें पढिबा जते एरर चैप्टर मु कहिबी किंतु आपाततः नाही किंतु जदि ट्रायल बैलेंस दी पट जगह न मिसिला if the trial balance does not tally if the both the balances do not agree then definitely there is some error तापर हमर काम हो कोठी एरर अछि खोजिबा मुझे तो ट्रायल बैलेंस एंड एरर चैप्टर को जीबी डिटेल मु पढेबी सेटा तापर कोन हबो ट्रायल बैलेंस यदि ठीक हे गला तापर सब एडजस्टमेंट आसीबो एडजस्टमेंट कोन सपोज हमें रेंट देइचे 10 मासर 10,000 रुपीज पेमेंट करछे सेटा देखेबो ट्रायल बैलेंस रे रेंट 10,000 किंतु तळे तार किछि एडजस्टमेंट भी थाई पारे एडजस्टमेंट कोन ना सपोज लास्ट 2 मासर नवंबर और डिसेंबर रो हमें पैसा रेंट टा 1,000 करके एमती 2,000 रुपीज देई ना है दैट इज कॉल्ड रेंट आउटस्टैंडिंग टा हमें भी अकाउंट को नबा कथा ना जेतो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करबा हमें आज देई नै काली तो दबा ना तेनु सेही 2,000 रुपीज टा हमरा एक्सपेंस that expense should have been recorded so तार विभिन्न कॉन्सेप्ट अछि मैचिंग कॉन्सेप्ट नहले भूल हे जिवो ठीक अछि आ accrual concept सेट लागिवो माने it has been accrued but we have not paid so we have to take it into consideration so in this way एठी हमरा ए दीटा भितरे ट्रेडिंग अकाउंट करिया पूर्वरु we have to take the adjustments into account तेणु ये ट्रायल बैलेंस तापर आसीगला एठी एडजस्टमेंट्स तापर आसला ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस शीट ट्रेडिंग अकाउंट कोन ट्रेडिंग अकाउंट रे मोटा मोटी आमे कोन रखू ओपनिंग स्टॉक रखू परचेजेस रखू वेजेस डायरेक्ट ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेजेस रखू जहाँ फैक्ट्री एक्सपेंस अछि ताकू रखू क्रेडिट साइड रे मेनली दीटा आइटम रहबो गोटे हला सेल्स ऑफ कोर्स सेल्स लेस रिटर्न्स नेट सेल्स ता माने बाय सेल्स रहिबो आ गोटे रह बाय क्लोजिंग स्टॉक एतिकी रही गला परे हमर जदी क्रेडिट साइड बडो हला ट्रेडिंग अकाउंट कथा कहूची जदी ट्रेडिंग अकाउंट रो क्रेडिट साइड बेसी हे गला डेबिट साइड कम हला जेतिकी डिफरेंस हला सेटा हला ग्रॉस प्रॉफिट सब ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड हला 20 लाख डेबिट साइड टोटल हला 18 लाख ता माने डेबिट पटे आ गोटे गैप रहला ना नहीं 2 लाख दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट आमे लिखा छै 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन करी कोठी ब्रॉट डाउन हो मु कहिबी एटा हला ट्रेडिंग अकाउंट so a trading account is prepared in order to know the gross profit during a particular period then we'll take it to the profit and loss account what is a profit and loss account the profit and loss account will be then prepared after preparing the trading account ro jo balance rahila kon balance rahila to balance carried down हम जोटा करथिले हम एपटे तार क्रेडिट पट लिखिया by balance brought down और by gross profit brought down आमे लिखले ग्रॉस प्रॉफिट संगे कौन हम ना आड हम सबू इनकम गुड़ा केमती सपोज आमे इन्वेस्ट करचे कोठी हमको इंटरेस्ट मिलला बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखिबा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड लिखिबा बाय रेंट रिसीव्ड लिखिबा एमती करके हमें सब लिखिबा ओके
तापरे डेबिट साइड रे कौन लिखा डेबिट साइड रे आम लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हाट आर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गोटे है आमर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कौन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भितर आसो ऑफिस रेंट ऑफिस इंश्योरेंस ऑफिस लाइटिंग ऑफिस सैलरीज all these things will be in the office and administrative expenses. Then will come to selling and distribution expenses. Selling and distribution expenses re semti asibo salesman salary, showroom expenses, showroom rent, showroom lighting, etc. Then asibo selling and distribution. Distribution re asibo amaro जो ड्राइवर आमर ये करूथबो कोन नहीं कि जिनस जाउथबो पिकअप वैन आम गोटे रखीचे से नहीं कि जिनस विभिन्न जगह दउची ड्राइवर सैलरी आसीबो सिमिलर सेल्समैन सैलरी आसीबो तार इनसेंटिव जदि किसी दउचे सेगुडा आसीबो शोरूम एक्सपेंसेस आसीबो शोरूम रेंट आसीबो शोरूम लाइटिंग आसीबो शोरूम इंश्योरेंस आसीबो ए सब आसीबो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ता छड़ा आहुरी केते गोटे एक्सपेंसेस अछि जेमति कि हमरो ट्रांसफरिंग सम अमाउंट टू द रिजर्व्स एंड प्रोविजंस सेटा सेठी देखा जीवो तापरे गुडविल रिटर्न ऑफ एटसेट्रा बहुत गुडे इंटेंजिबल एसेट जदि रिटर्न ऑफ हबो ता कहते अमोर्टाइजेशन सेगुडा भी आसीबो एटा सब डेबिट साइड रे आसीबो कारण या जगो हमर प्रॉफिटटा कम होची तो प्रॉफिट एपटे मनकर क्रेडिट साइड रे हला 20000 बाकी एपटे डेबिट साइड रे टोटल हला सपोज 17000 ताले 3000 रहला नेट प्रॉफिट आमे लिखिया केमती टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट को रहबो बैलेंस शीट रे आमे आसीया सेठी की तो फर्स्ट ऑफ ऑल आम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तार पर्पस जानीदेले तापर आसो क्लोजिंग बैलेंस शीट जो बैलेंस शीट आम तापर तैयारी करबा सेथरे कोन रहबो ओनली पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट रहबोनी नॉमिनल अकाउंट जेमती ऑल द एक्सपेंसेस लाइक रेंट एडवर्टाइजिंग बैड डेट्स एवडा सब रहबोनी हो से सब रहिथिबो कोथरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रे बैलेंस शीट इट इज वेरी फंडामेंटल दैट इन द बैलेंस शीट वी विल हैव टू शो ओनली द पर्सनल अकाउंट्स माने क्रेडिटर्स डेटर्स ये सब रहिबे एंड रियल अकाउंट्स लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी देन योर मोटर व्हीकल्स फर्नीचर एंड फिक्चर्स ये सब रहिबो सो इन दिस विल प्रिपेयर द क्लोजिंग बैलेंस शीट तापर तो मु कहूतिली ओपनिंग बैलेंस शीट कोन 31 डिसेंबर मनकर हमर ए वर्षर शेष दिन तेबे आमे ताऊ कोन करछे क्लोजिंग बैलेंस शीट रे रखि दोचे पुणी जेतेबेले नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर आसीबो सेठी हमें ओपनिंग बैलेंस शीट से थ्रू नहीं तैयारी करदा तमे एंट्री अछि क्लोजिंग एंट्री ओपनिंग एंट्री अछि हमें पढ़िबा जेतेबेले जर्नल एंट्री पढ़िबा तो साइकिल कंप्लीट हे गला नहीं आगे हला ओपनिंग बैलेंस शीट रो एक्सट्रैक्ट कले ट्रांजैक्शन कले ताको बढ़ेले कमेले पुणी जर्नल कले ताको रिकॉर्ड कले जर्नल को पुणी क्लासीफाई कले गोटे गोटे अकाउंट रे कोन कोन केते बैलेंस रहला ताको लेजर रे तैयारी कले सेही बैलेंस को नहीं ट्रायल बैलेंस कले ट्रायल बैलेंस रु आउ एडजस्टमेंट देकरी मिसई की दी जण जाको आमे ट्रेडिंग अकाउंट कले ट्रेडिंग अकाउंट रे ग्रॉस प्रॉफिट बाहरला ग्रॉस प्रॉफिट पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कले सेथु नेट प्रॉफिट बाहरला नेट प्रॉफिट पर पुणी क्लोजिंग बैलेंस शीट आम तैयारी कले क्लोजिंग बैलेंस शीट रे कोन रहइबो ना ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल इंक्लूड व्हाट ओनली पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट्स नो नॉमिनल अकाउंट क्लोज हो मरी जीवो सेठी कोठी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रे सरी जीवो ठीक अछि तो ये है अकाउंटिंग साइकिल अच्छा आई विल रिक्वेस्ट यू इफ यू हैव अंडरस्टूड रियली देन यू कैन गिव ए थम्स अप ओके लाइक एंड ऑल्सो यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल ऑलराइट so better to link our share and give it to other friends will also be benefited just like you are going to be benefited now all right एथरे आसी किछि हां केतेटा कमेंट आसी मुडे पढि दउची शिव सुंदर स्वाई और नमस्कार थैंक यू Bhasmita Patra has given a thumbs up thank you welcome you will be acquainted with all these terms
of accountancy if you just give little bit attention. Thank you. Now chat kichhi achhi ki? Sonali, good morning sir. Thank you. Good morning to you also. Subhasmita, good morning. Good morning Subhasmita. Alice Star. Message retracted. Subhasri Mahanti. Susrita Mahanti. Good morning. Good morning Susrita. Then Rajnandin. Good morning. Good morning Rajnandini. Good morning Abhishek. Thank you. Now we'll come to account. If I remember, I have given you some definition of account in the introductory class. Now come to a practical account, a statement setting out for a period all the transactions relating to a person, a thing or otherwise, the benefits received being in one side and benefits given being on the other. Let me explain it fully to you so that you will not confuse. Within the definitions, there are many definitions of accounts. So I shall tell you, it is also, I have asked many questions on accounts to my students. They all are very proficient in telling me about the accounts, but what is an account? This question is a very difficult question for them. So better give some attention for this. All right. It is a statement. What is a statement? Which relates a list of things. That is called a statement. A statement setting out for a period. Setting out for a period means when we are preparing suppose cash account or a building account or a motor car account or Mr. X account, Mr. Y's account, whatever it may be. आमे कौन करुचे? Mr. X account जिते आमे तैयारी करुचे, तांको कौन देइचे, तांकाठु कौन पाइचे, आमे सबु लिखुचे. So that is called setting out for a period during a particular period. गोटे वर्ष भितरे बा गोटे मास भितरे भी हे पारे. गोटे वर्ष भितरे जहाँ जहाँ तांके साथ ट्रांजैक्शन सबु लिखा होची गोटे जगह रे. That is called an account. All the transactions मु बुझेइली, all the transaction relating to a person, a thing or otherwise. Account गुड़ा सेमते हे परिबो. कोन? Personal account relating to a person, thing, a real account. Suppose real account रे cash आसीबो, furniture आसीबो, building आसीबो, land आसीबो, motor vehicles आसीबो, plant आसीबो, machinery आसीबो, ये सब आसीबो. Person रे तो तुम जानते हो XYZ समझते आसीबे. Person रे company भी आसीबे, person रे institution आसीबो, मनकर रेवेन्सा university account. That can be one account. That is a personal account. Okay. Types of accounts हम पढ़िया जेतबेले मु बुझेइ देबी. A person or a thing or otherwise. Otherwise means nominal account. Nominal account are the expenses, losses, incomes, gains. These are all called nominal accounts. So they can have one account also, like rent account or say interest account or commission account, loss account, profit and loss account. Like so, profit and loss account is also there. So all these things are nominal accounts. The benefits received being on one side. Suppose Mr. X is our customer. We are selling goods to him. When we are giving him the benefit, we are giving him, that means his account will be debited. But when he gives us cash, his account will be credited. So because why he will be credited? Because he is giving me a benefit. When I am receiving cash from him, definitely I am getting benefit from him. So when I am giving the benefit, he will be debited. When I am receiving the benefit, I will be crediting him. That account will be credited. Say Mr. X account debit habo ketebele sie jetebele benefit paibo, credit habo ketebele setebele je benefit ta amku jetebele dabo, emti habo. So benefit, sabu benefit received gote side rahebo, sabu benefits given on the other side rahebo.
एटा यदि लेफ्ट हैंड साइड रोचे सेटा राइट हैंड साइड रहबो सेटा यदि राइट हैंड साइड रोचे एटा लेफ्ट हैंड साइड डेबिट आउ क्रेडिट एमती रहिबे समस्ते ओके ना ठीक अछि बोधे हाँ तापर आम आसवा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मु तुमको गोटे ग्राफ करके बुझे देवी ठीक है हम देखें नहीं ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स डिटेल आम पढ़ा टाइप्स ऑफ अकाउंट विल हैव टू रीड इन डिटेल लेट मी ऐड वन पेज accounts can be divided into 4 types. These are the types of accounts. First one is personal account. Second one is real account. Third one is nominal account. And the fourth one is valuation account. In this way, mainly there are 4 types of accounts. First one is personal account. What is a personal account? A personal account refers to a person. The person may be Mr. X, may be Mr. Y, may be Ravenshaw College, may be SBI, that is State Bank of India, may be Allahabad Bank, whatever it may be. So there are different types of personal accounts also that will again cover. So personal account is again divided into natural personal account, artificial personal account, and number 3 representative personal account. Representative personal account. Now let me give you some examples so that it will be better and clear for you. Natural personal account, suppose Ram's account, Hari's account, even you can write Allah's account, and X account, Y account, like this you can also write. Anybody who is a born person, who is a natural person. Suppose my account will be called Jayadev's account. Her account may be called Archita's account. Her account will be called Sangita's account. My brother's account may be Vijay's account, like this. Because we are born person, naturally born person, so it is called natural personal account. Rule will be same for all types of personal account, debit the receiver, credit the giver, I shall discuss. Then artificial personal account, who is not a person, but he has been recognized by the court of law as a person. I gave you, suppose State Bank of India.
or for that matter any bank or LIC of India. This is a company, Tata company or Tisco or Telco. Like this, the companies, even the partnership firms, all they will represent your artificial personal account, because they are not persons, not born persons, but they are called personal accounts. So that is called artificial personal account. Suppose गोटे example मो दोची, आमे रेवेन्सा यूनिवर्सिटी रे अप्लाई करचे गोटे पीजी पढ़िया पाइका, सेठी मार्क बेसिस रे सब होउची, आमे मार्क बेसिस रे पाई गले, हमको प्रोविजनली से सिलेक्ट कर देले, कहना आमे रखीचे 85%, जदि सिलेक्ट कर देले हमको कहले तमे पैसा दियो, आमे देलु तांको 2000 रुपीस फीस, हमर ट्यूशन फीस को एडमिशन फीस को हमें 2000 रुपीस देले, जदि 2000 रुपीस देले ता परदिन हम पाकु लेटर आसला जे तुम 2000 रुपीस नहीं जा आउ कहीं आउ गोटे पिला तुमठू हायर मार्क रखी से पाइनी, आम कौन करवा कोर्ट को जाकि रेवेन्सा कॉलेज ना रेवेन्सा यूनिवर्सिटी ना केस करियो, कहीं हमको तो देइथिलो तुम कहीं पुटी काटिदेल, एक कथा तुम करवा, कोर्ट जहाँ डिसाइड करिवो। तो सी यदि आर्टिफिशियल पर्सन न होता तार केमती केस करते, आम सीना आम पड़ोसी ना केस कर, आम एग्नेस्ट पार्टी ना केस कर, आम निज भाई ना भी केस कर, आम सांग ना केस कर, तो बॉर्न पर्सन, किंतु ये तो बॉर्न पर्सन नुह रेवेन्सा कॉलेजटा, किंतु आम ता ना केस कर, से कहते आर्टिफिशियल पर्सन। सो देयर अकाउंट विल बी आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। देन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जे बॉर्न पर्सन भी नुह आर्टिफिशियल पर्सन भी नुह, किंतु से माने पर्सनल अकाउंट रे जिबे केमती। सपोज आउटस्टैंडिंग रेंट, एटा गोटे अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग रेंट है कौन, गोटे रेंट आम लैंडलॉर्ड को दबा कथा है, मुझे कहती आम 10 मंथ्स रेंट दे देचे 10,000, आउ 2 मासर देने माने आम मुंड उपर किए बसला, से लैंडलॉर्ड बसला, कहला मोर 2000 टंका बा जी 1000 रुपीज हिसाब से 2 मासर 2000 रुपीज तुम देन, ये जो देन बोली आमको से कहब बा कहला, सेटा हूँ सी गोटे आउटस्टैंडिंग रेंट हो गला। दैट इज नॉट रेंट, रेंटा गोटे नॉमिनल अकाउंट, किंतु आउटस्टैंडिंग रेंट हो गले सेटा हो गला कौन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग रेंट, सपोज accrued accrued interest, accrued interest माने कौन, आम गोटे जगह 1 लाख रुपीज डिपोजिट करचे, तार 10,000 रुपीज आसवा कथा, एपर्यंत मनकर से दे ना इंटरेस्टा, जदि दे ना आम कहबा accrued interest, दैट बिकम्स आवर एसेट। से जो accrued इंटरेस्ट है सी गोटे पर्सनल अकाउंट हो गला, किंतु की प्रकार अकाउंट ना रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये 3 प्रकार नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, सबु प्रकार अकाउंट को गोटे रूल लागू हम, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, आम डिस्कसन करवा, किंतु गोटे रूल लागू हम, खाली ये मन रखिता। तापर आम आसवा रियल अकाउंट को। रियल अकाउंट 2 प्रकार अच्छी, रियल अकाउंट गोटे है रियल अकाउंट है गोटे टांजिबल गोटे इंटांजिबल। एटा यदि 1 है एटा 2 है, ये जमा 2 प्रकार अच्छी। टांजिबल है कौन, जोटा आम टच कर पारुचे, जोटा फील कर पारुचे, जोटा देखी पारुचे, जोटा लिफ्ट कर पारुचे, गोटे जगह को आ गोटे जगह को नहीं पारुचे, एटा है टांजिबल रियल अकाउंट। टांजिबल रियल अकाउंट भितर तुम आसो कौटा प्लांट एंड मेसिनरी आसो, मोटर व्हीकल्स आसो, इवन लैंड एंड बिल्डिंग आसो, एगुड़ा सब तुम हूँ कौन टांजिबल, लूज टूल्स आसो, ये सब टांजिबल रियल अकाउंट। कैश आसो,
कैश भी टांजिबल रियल अकाउंट तापर आसो इंटांजिबल इंटांजिबल रे मेनली तुम मन रख चारिटा जिनस गोटे हला गुडविल आ गोटे हला कॉपीराइट आ गोटे हला ट्रेडमार्क गुडविल कॉपीराइट ट्रेडमार्क एंड पेटेंट्स ये एग्जांपल तुमको आगु मुझे बुझे गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ ए फर्म और ए पर्सन कॉपीराइट व्हेन वी आर राइटिंग बुक्स कॉपीराइट इज रिजर्व दैट इज आल्सो इंटेंजिबल ट्रेडमार्क आम देखी पारे अवश्य किंतु तो लिफ्ट करके नहीं पारे कौन ना ट्रेडमार्क सेमती आउ पेटेंट ये चार्टा कहूँ इंटेंजिबल एसेट्स बा इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स ओके बाकी रहा नॉमिनल अकाउंट दुई प्रकार हम गोटे हम कौन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आ गोटे है इनकम्स एंड गेन्स nominal account is of two types expenses and losses incomes and gains जो रेंट गोटे देखा जाए आम रेंट दबा को अच्छी आम जन ठार घर भड़ा नहींचे दैट रेंट बिकम्स आवर एक्सपेंस सो दैट इज कमिंग अंडर दिस सिमिलरली लॉस सपोज जाओ जाओ जमी कहली कार एक्सीडेंट हो गला दैट इज अ लॉस दैट इज आल्सो ए नॉमिनल अकाउंट सिमिलरली इनकम्स एंड गेन्स रेंट जो पाइबा इंटरेस्ट जो पाइबा कमिशन जो पाइबा सेटा हला तुम कौन ना इनकम्स एंड गेन्स नॉमिनल अकाउंट अंडर रे गेन्स है कौन जदि आम प्रॉफिट किसी है आम 5000 रुपीज गोटे जिन किणले आम 6000 बिक्री करें 1000 रुपीज प्रॉफिट है दैट इज ए गेन दैट गेन इज आल्सो नॉमिनल अकाउंट नाउ कमिंग टू वैल्यूएशन अकाउंट वैल्यूएशन अकाउंट होची कौन व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ ए लायबिलिटी और ऑफ एन एसेट in order to correctly assess the value of an asset or a liability this valuation account is required तार एग्जांपल कौन हम मन कर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स केमती होची देख सपोज आम एसेट साइड रे लिखिले 2 लाख रुपीज डेटर्स बट फ्रॉम आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस आम जाचे एत दिन व्यवसाय कला समस्ते दियंती पैसा 10% लोक देवेनि ही देवेनि तेज आम कौन करिया वी हैव टू क्रिएट ए प्रोविजन ऑफ 10% ऑन द सन्ड्री डेटर्स आर हाउ मच 2 लाख 10% ऑफ 2 लाख इज हाउ मच 20,000 so that 20,000 rupees we should not expect से आम कौन करिया गोटे प्रोविजन क्रिएट करिया तार ना कौन दवा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स तार इफेक्ट कौन होची ना आम लिखुचे सन्ड्री डेटर्स 2 लाख लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000 एमती करी रियल केते पाइबा 1,80,000 सो व्हेन इट इज नेसेसरी इन टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एन एसेट देन ए वैल्यूएशन अकाउंट अगेंस्ट इट विल बी ओपन्ड सिमिलरली इन केस ऑफ लायबिलिटी आल्सो हाँ आउ गोटे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एसेट रहा एति आम जदि रिटन डाउन वैल्यू रे लिखुचे से कमे 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 जीवा न करवा आम सब ओरिजिनल कॉस्ट रे लिखा आ गोटे एपटे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखिदेवा प्रथम वर्ष 10,000 द्वितीय वर्ष 20,000 है तृतीय वर्ष 30,000 है लक्षे टाटा एपटे रखे किंतु से एपटे प्रोविजन ता एगेंस्ट प्रथम वर्ष 10,000 था तार रियली वैल्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ये एसेट केते रहउची ना 1 लाख लेस 10,000 दैट इज 90,000 ऑलराइट सो दैट इज रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ द एसेट और नॉट सिमिलरली क्रेडिटर्स ऊपर मन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स आम रखा क्रेडिटर्स है लक्षे तार मन 5% आम रखा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट से आम जाने से आमको 5% छाड़देवे जब आम एति दिन भर पैसा देदेवा तेणु 5% आम रखीदे कौन करवा आम जाना आम जाने से 1 लाख नुह दैट इज 95,000 आम करवा सन्ड्री क्रेडिटर्स लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 5,000 एमती कर 95,000 लिखुचे बैलेंस शीट रे आम ट्रू एंड फेयर भ्यू लिखा
तेणु आम जब 1 लाख लिखा से विंडो ड्रेसिंग हो गला आम लिखा ट्रूटा के 1 लाख लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स ओके so in this way the accounts have been divided like this all right now we'll take a break बंद कर दिया so if we go through these things then one after another you will be understanding all the things very clearly and the thing is when the examination in the examination they give you what they will give you the objective type questions or you can say in form of MCQ. MCQ means your 4 or 5 or 3 alternatives will be given to you, the question will be given to you. So when the question is there, one will be the correct answer out of the 3 or 4 alternatives which will be given to you से गोटे तुम ठीक हे तेणु आम जदि एगुड़ा सब डिटेल न जानी गोटे एग्जांपल तो मुझे कहूँ मनकर से कह which from the following is a nominal account एमती लिखी क्वेश्चन नंबर 1 एटा है तार से 4टा अल्टरनेटिव देथिबो ए बी सी डी ए रे देला मन कर मिस्टर एक्स अकाउंट बी रे देला टाटा कंपनी अकाउंट सी रे देला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और डी रे देला डी रे देला मन कर लॉस बाय थेफ्ट ऑलराइट लॉस बाय थेफ्ट देन एतिके दे देला परे आमे एथुर कोन करबा ना डी इज द आंसर बिकॉज मिस्टर एक्स अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट दिस इज ए टाटा कंपनी इज ए पर्सनल अकाउंट provision for doubtful debts is a valuation account then loss by theft is a so while reading all these things what you have to do you have to choose the correct one by eliminating other three things but the thing is other 3 things why it is not correct that you should know so that in another question maybe this will be the correct answer so you have to understand that particular point so so far as the MCQ questions are concerned you have to be very careful about not only that which is correct but also the other 3 alternatives that will give you quite good impetus okay so let us stop here so far as this class is concerned and the next class will be again starting at 12:15. Thank you. हाँ कर चलो किसी असुविधा नहीं मु कहीं कहूँ कि एक्चुअली गोटे घंटा